A very good evening to this evening live interactive session of ours, and a very good morning to all of you who are joining us from US, from Canada, and from other parts of the world where it's just an early morning. So as we always try, we get online with you. I generally go live in my interactive sessions on Wednesday with you. One of the sessions is specifically for the Indian patients and one for our international patients, and today being the session for the international patients. I would also be going ahead with your questions, which are the most important for me. And as we always see that our first priority is the question. So coming directly to Harmeet's question. हरमीत, बहुत बढ़िया लगा बेटा जान करके कि अभी आप खड़े हो पा रहे हो, बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट किया था कि अगली बार जब आप आओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप सीढ़ियां अच्छे से चढ़ करके खुद मेरे कैबिन में आओ। और the video which you were just watching was of one of our research centers. So you're always welcome, any one of you who wants to personally have interaction with any of our doctors. You can visit our research charitable center. As far as me myself I'm concerned, whenever I'm in India, at least once in 2 months in Amritsar and once in a month at Chandigarh, I do have my OPDs over there. Apart from this, the upcoming OPDs of US, it will be scheduled in the last week of June. So you can reach out our team for that also. So going ahead with the next question, I am having Sir Harsh. 6 साल 4 महीने हो गया है, 25 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। थोड़ा स्पीच बड़ा है और थोड़ा समझ और आई कांटेक्ट नहीं करता है और बुलाने पर पलट कर देखता नहीं है। सर ट्रीटमेंट कब तक चलेगा, रिकवरी कब मिलेगी और मुंबई कब आएंगे? देखिए, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हर्ष की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा स्पीच बेटर है हर्ष के केस में, और आपने बताया है कि अभी थोड़ा स्पीच बेटर है, तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहूंगा हर्षी, देखिए किसी भी कीमत पे एबीए, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग एबीए की इंपॉर्टेंस को समझें। many a times what happens is that when we talk about ABA, the ABA is often taken lightly. ABA के टर्म का जब हम बात करते हैं तो many a times the patients will tell us that, see, we are taking your herbs regularly. Yes, the child is less hyperactive. The child is now understanding you can say, our commands are being followed by the child, and a lot of improvements are there in the child. And when we talk about the speech of the child, so many a times when the child is more than 4.5 years in age, that is a reflex language development age gone stage. Now at that stage, what is important is that we understand that it is a trainable age for the child, and if we are to train a child at that age, ABA is something which is very essential for the parents to follow at home. Many times the parents feel that we are leaving our child at a therapy center and they expect the therapy center to do everything for them. But unluckily, those therapy centers are generally OT centers, and they can bring your child to a level where he can use a single word. When you ask him, "Ye kaun hai?" Papa. Who's her? Mama. So the child becomes a bit responsive and starts using words a bit, but till the time the parents are themselves involved in the ABA methods in which we generally guide about to our patients, the things are not that easy. So that is why my request, please elaborate me on who is doing the ABA for you from our team and what is the frequency of ABA so that I can reply you back in a far better way. निताशा जी, आपने देखा सर मेरा बेटा 5 ईयर का है और ओटी और स्पीच थेरेपी चल रही है, पर अभी भी बैबलिंग साउंड से बोलता है, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज भी हैं। So talking about constipation, now constipation is something which is a very common thing in autistic kids. It will be either loose motions or constipation, and the constipation is something which is more common than loose motions. So why? Generally, when we talk about constipation, the autistic kids are very choosy in what they eat.
it becomes very tough for the parents at times to motivate a child to be taking fiber-rich diet. They are very choosy, very selective in eating the meals. So a less fiber going inside is one of the reasons. Second reason is autistic kids generally don't chew the food that easily. They will throw away the food inside their stomach. So that is something which later on hinders in the peristaltic movement going on in the proper way. That is not very good for the digestion. So that is why they have digestive issues, they have constipation. So a very good thing for your children over there is Gulukand. Gulukand is a good thing for autistic kids to improve the constipation part. Apart from Gulukand, if you feel that the problem is too much and your child is having regular constipation, the best thing is Babuna drops. We have developed a special kind of drops on the name of Babuna. Now, these drops, they generally will improve the digestive issues of the child, and at the same time, while they improve the digestive issues of the child, these drops also aid a lot in the constipation. So Babuna drops are something which you can start using for your child along with the rest of the medications. So moving ahead with the next question. The next question is Navinder. So Navinder ji, you have mentioned the patient code and you have mentioned he's 9.5 year old. He started the treatment last month and he laughs a lot. We don't know why. Is there a reason? Navinder ji, when we talk about Prab, who is 9.5 years old, and if we see that Prab is laughing too much, so we are always to remember that as we will keep on working on the subconscious mind, and he will be in a situation where he can show his emotions in a better way, uncontrolled laughing will come down. But to aid in that, I guided you that see, when we talk about superconscious or preconscious, adhyatma, if we connect the child to the superconscious or the preconscious, that is adhyatma, the child, the uncontrolled laugh, unexplainable laugh is very quickly in that case controlled in the child. So please, in that case, I would be requesting you that involve him more into spirituality and give us some time. Generally, the Ayurvedic medications which we are giving to a child, they take around 1.5 months to even start working. And that is why I always guide the parents that see, compare after 6 months. There will be phases in these 6 months when you will feel that yes, the child is improving very quickly. There will be phases when you will feel that the child is not improving quickly. But in any case, once we are doing everything and we are doing it consistently for 6 months, you will be very much satisfied. The results will be very good. You won't be disappointed. Believe me, you just need to be following everything. Going ahead, and Alice, you have written, I'm Alice from Australia. My niece hyperactivity is reduced, eye contact improved by herbs and ABA session, really effective. Please guide how to improve speech. The speech, Alice, we will be targeting through ABA itself. And it's really great to know that all other things are improving. We will be working specifically on speech through ABA along with our herbs. Once our ABA expert connects with you, you can request that ABA expert to be using ABA for speech. John Wick, you have mentioned that, hi, good doctor. My daughter's treatment is going under ND care. And patient code is written since October last year we started. She's showing good improvement. Her sensory issues have also subsided and less hyperactive. We are now concerned about speech. It seems to us she wants to communicate but don't know how to do that. Guidance is required. Hi, Mr. John Wick. It's good to know that yes, you are following all the things, and it's good to know that your daughter is improving. As I just elaborated to Alice, see, at a particular age, specifically if the age is about 3.5 years, speech has to be developed as a habit. Speech has to be developed as a need. Now that happens when the right kind of ABA is used in the child so that the child understands that speech and speaking makes my life easier. Unluckily, in US, in Canada, in Australia, in most developed countries, when ABA is done, it's a tab-based ABA which is done over there. Now with the tab-based ABA, they believe that it's important for the child to communicate, and once the child starts communicating, the child will also start using language. So that's why the ABA which goes on over there is good, but it's not good for bringing the speech in check. As a result of that,
we have to use the specifically developed ABA which we developed for children. And that's what we generally train the parents about. Once the parents are doing the ABA which we are guiding, speech is very quick to come. Unluckily, in many cases, parents are not able to spare time. In many cases, the parents feel that they're already going for ABA and other therapies. As a result of that, often the ABA which we are training to the parents do not spare out time. And it's vice versa also. At times, our psychotherapists, they go really busy, and we are not able to spare out that much time. But my genuine request, there will be instances when our psychotherapists may go busy, but in all other junctures, you will get ample sessions from our end. You just need to learn all the techniques and then apply those techniques for your child. Going ahead, Akashdeep ji, you mentioned that, sir, I am Akashdeep Day contacted your team recently for my nephrotic syndrome and they have guided me and the doctor has consulted me very kindly. Sir, I have a question. Akashdeep, will I be cured and how much time will it take roughly? Akashdeep ji, see, your coordinator is Divya. She has mentioned me that your age is 18, you are from Kolkata, and yes, when we talk about nephrotic syndrome, you have been advised with Nephrosef, PTM5, renal care tablets, and Gokushuradi Guglu. So these are the herbs which you have been guided with. I would like to elaborate you over here that see, when we talk about nephrotic syndrome, it is known as pathic pramehi in Ayurveda. Now, pathic pramehi is completely curable in Ayurveda if treated in a proper way. And I always advise the parents who approach us for nephrotic syndrome that see, if it's possible for you, don't miss on the pulse diagnosis which we do. Yes, definitely the medications which have been prescribed to you by my doctors are good for nephrotic syndrome. But having said that, if apart from Nephrosef, PTM5 and other medications which have been guided to you, you are able to spare out some time where we can do a pulse diagnosis for you, and especially when I am in India, and if you can spare out some time over there, that will really be very helpful because then we can do the dosha evaluations. So till the time you are not able to do that, you can go ahead with the herbs prescribed. Do remember anything which is heating in potency, जिसे हम गर्म तासीर का बोलते हैं, that is not good for you. So you're required to be taking things which are cooling in nature rather than heating in nature. And don't worry, nephrotic syndrome, a person can completely come out of nephrotic syndrome. We do not need to use those corticosteroids, methylprednisolone and other things regularly. And we do not need to rely on those harmful things. पूजा जी आपने लिखा है, सर मेरे बच्चे का स्पीच डिले है और वो अभी 10 साल का है, क्या उसकी स्पीच ठीक हो सकती है? पूजा जी कुछ वीडियोस भेज दीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है. देखिए, एक 10 साल के बच्चे पे मैं ऐसे आपको बोल दूं हाँ जी स्पीच ठीक हो जाएगा, अपने आप में वो एक गैस वर्क है. बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब एक एज के बाद बच्चा अप्रोच करे तो वहाँ हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर एनालिसिस करें और उसके बाद हम गाइड कर पाए. हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट डिटेल्स विच आई कैन हैव ओवर हियर इज ऑफ प्रवीण सुल्ताना जी. प्रवीण जी आपने कहा सर मुझे थायराइड है और उसके लिए मैं टेबलेट ले रहा हूँ और मुझे एंजाइटी भी है, उसके लिए मैं क्या लूँ आयुर्वेदिक मेडिसिन? प्रवीण जी सबसे पहले तो अगर आपको थायराइड भी है, चलो एंजाइटी की बात तो हम बाद में करते हैं, आप आयुर्वेद क्यों नहीं अपनाते हैं थायराइड के लिए? देखिए आयुर्वेद में अगर हम थायराइड की बात करते हैं तो एलोपैथी में तो सारी जिंदगी थायरोनॉम खानी है, सारी जिंदगी मेडिसिन खानी है. आयुर्वेद में एटलीस्ट 50% पेशेंट्स में दवाई बंद हो जाती है, सभी में नहीं होती है. कुछ पेशेंट्स में इतने ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, रोग इतना पुराना हो चुका होता है कि वहाँ पर वो नहीं कवर कर पाता है और वो लाइफस्टाइल में भी हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं. लेकिन बाकी में जहाँ थोड़ा सा पेशेंट कोऑपरेट कर दे, दवा बंद हो सकती है. प्रवीण जी जहाँ तक एंग्जाइटी का सवाल है, एंग्जाइटी क्या वाकई में ही जिंदगी में कुछ स्ट्रेसफुल चल रहा है या बिना कारण से एंग्जाइटी है? अगर जिंदगी में कुछ स्ट्रेसफुल चल रहा है फिर आपके लिए इस्तेमाल की जाएगी अडेप्टोजेनिक मेडिकेशन जैसे अश्वगंधा है, और अगर बिना कारण से स्ट्रेस है तो उसके लिए फिर हमें संज्ञा स्थापक औषधियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसा कि ब्रेनोए ब्रेनोआर के अंदर है. सो आप प्लीज़ ये लिखिए और आप चाहें तो और डिटेल्स भी दे सकते हैं अपने स्ट्रेस के बारे में. हमारे हेल्पलाइन नंबर 7791 006
006 के ऊपर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तब तक ब्रेनो ए और ब्रेनो आर का इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं। मेडिटेट किया कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस को बहुत जल्दी भगाती है मेडिटेशन। हम आगे चलते हैं और हरि ओम प्रसाद जी, सर मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट आपके यहाँ से चल रहा है 6 महीने से, काफ़ी अच्छे सुधार देख रहे हैं, आशा करता हूँ आपसे जल्दी आके नमस्कार हरि ओम प्रसाद जी, बहुत बढ़िया लगता है जी जब पेरेंट्स शेयर करते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी उस परमात्मा की दया से निभा पा रहे हैं। देखिए, उस प्रभु ने एक जिम्मेदारी लगाई है कि अपनी नॉलेज के हिसाब से हम अपनी तरफ से कोई कोताही ना करें, बेस्ट से बेस्ट जो कर सकते हैं वो करें, और फिर वो मालिक रहमत करता है। और बहुत अच्छी बात है, आप यूं ही लगे रहें और आगे भी आप इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे और डेफिनेटली जल्द मिलेंगे जी। सैदा जहारा जी, आपने देखा है सर मैं यूके में हूँ, मेरी 19 मंथ्स की बेटी है जो ऑटिज्म है, मैं आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ और आपकी डिटेल्स जो मेरे पास आई हैं वो आई हैं कि शिफा ज़ारा शाह 19 मंथ्स गर्ल, एंड आपके केस में मैं डेफिनेटली चाहूँगा सईदा जी कि आप कुछ वीडियोस जो है बिटिया के हमें भेज दीजिए। देखिए, सबसे बढ़िया बात, ऑटिज्म में ठीक होने का सबसे पहला कदम क्या है? सही उम्र। सही उम्र क्या है? जितना जल्दी हम ये एक्सेप्ट कर पाए कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म है या दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है और हमें कुछ करना है, जितनी जल्दी, जितनी छोटी एज पे, जैसे अब आपकी गुड़िया के केस में वो भी रिफ्लेक्स लैंग्वेज डेवलपमेंट एज पे, इस एज में करिश्माई तरीके से, जादू की तरह से क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि बच्चा अपनी रिफ्लेक्स लैंग्वेज डेवलपमेंट एज, अपनी रिफ्लेक्स लर्निंग एज उसके ऊपर होता है। तो आप कुछ वीडियोस हमें भेज दीजिए और आप जो बातें आपको गाइड की जाएंगी मेरी टीम के द्वारा वो फॉलो कीजिए। कोशिश कर सकता हूं अगर बहुत ज़्यादा बुकिंग्स नहीं हो, क्योंकि अभी कुछ महीने हमारे नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स बुक्ड हैं, लेकिन जब भी पॉसिबल होगा मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुड़िया को ज़रूर देखूंगा। यूके में जनरली मेरा चक्कर जून में लगता था, बट इस बार क्योंकि जून काफ़ी ज़्यादा पैक्ड है यूएस के कारण, शायद यूके का चक्कर मैं नहीं लगा पाऊँ, तो अगर लगा तो मैं डेफिनेटली आपको यूके में मिलूंगा, वरना यू आर वेलकम, आप आएँ, भारत आएँ, हम यहाँ भी जो है एक बार बिटिया को अच्छे से देख सकते हैं। बाकी अदरवाइज तब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चलते हैं। कुछ चीज़ें जो है मैं अपनी टीम को गाइड करूंगा, वो आप फॉलो ज़रूर करिए शिफा के केस में, ताकि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी बिटिया जो है वो एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी जी पाए। सुनीता जी, आपने लिखा है अपना कोड और आपने बताया सर माय डॉटर इज 6 years old सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, शी कैन नॉट स्पीक एंड स्क्रीम्स अ लॉट। और मुझे बताया गया है कि प्रियांशु आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ पिछले 5 महीनों से आप ऑनलाइन जो है कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ हर्ब्स ले रहे हैं, ब्रेनो आर, कुकुरबिट ऑयल वगैरह। स्पीच में आप जो इम्प्रूवमेंट है वो चाहते हैं। स्पीच में देखिए एबीए बहुत बार क्या होता है, खास तौर पे उन पेशेंट्स में जिन्होंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया होता है, वहां पर क्योंकि उतनी डायरेक्टली मेरे से बात नहीं हुई होती है, मैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं बता पाता हूँ हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने की भी। देखिए, आप कोई भी सेशंस मार्केट में करवा रहे हैं, वहां पर कोई दूसरा आपके बच्चे के लिए सेशन कर रहा है। हमारा ये मानना है कि एक बच्चे के सबसे बढ़िया साइकोथेरेपिस्ट उसके माँ बाप खुद हैं। यही कारण है कि हम एबीए की टेक्निक्स पेरेंट्स को सिखाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप साथ के साथ एबीए के टेक्निक सीखिए, वो आप उस पर अप्लाई कीजिए ताकि गुड़िया जल्द से जल्द बोल पाए। बाकी अगर जरूरी लगेगा तो आप हमारा सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आ रही है, स्पीच भी जरूर आएगी, आप हिम्मत रखिए और बातें जरूर मानते जाइए। हम आगे चलते हैं। देवांश जो है पेशेंट का नाम, बच्चे का नाम है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है बट सर हाइपर एक्टिविटी हैज आल्सो इंक्रीज्ड, हाउ कैन वी रिड्यूस हैंड क्लैपिंग, शाउटिंग, सेल्फ टॉकिंग। थोड़ा सा मुझे डिटेल्स और चाहिए होंगी। कितना समय हो गया दवाई लेते हुए? एबीए हमारे यहाँ पे कौन कर रहा है? आप एबीए को कितना समय दे रहे हैं? और हर्ब्स की डिटेल तो मैं चलो अपनी टीम से ले लूंगा अगर कुछ बदलाव करना है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये पता चलता है एज एग्जैक्ट खास तौर पे अगर आप बता पाए। मिष्टी जी, आपने कहा हेलो सर, 5 मंथ पहले आपसे मिले थे, मेरा बेटा 5 मंथ में बहुत अच्छा इम्प्रूव दिखा रहा है, एंड सर
आजकल गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो डाइट में क्या बेस्ट हो सकता है? देखिए, एक तो ग्लूकन जरूर दें, रूह अफ़ज़ा पिला सकते हैं, खस का शरबत पिला सकते हैं बच्चे को। ड्राई फ्रूट्स, अब गर्मियाँ हैं तो अवॉइड कीजिए। मुरब्बे खिलाइए, मुरब्बे भी बेटे के लिए बढ़िया हैं। और मोटा मोटा आप ये याद रखिए कि हमें तासीर में ठंडी चीज़ें देनी है बच्चे को, गर्म चीज़ नहीं देनी है। चार मगज ग्राइंड करके दूध के अंदर भी दे सकते हैं। अब इनमें से बहुत सी चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूँ जो एलोपैथी वाले मना करते हैं। वो कहेंगे दूध नहीं देना, चीनी नहीं देनी, ग्लूटेन नहीं देनी। मेरे एंड से ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अगर डाइजेस्टिव फायर को प्रमोट कर लिया जाए, जाठराग्नि प्रज्वलित है, तो ये सब चीज़ें फायदा ही करेंगी, नुकसान नहीं करेंगी। इसी कारण से अब जब हम इलाज करते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई दैट वी कीप on working on the digestive fire for the child. So going ahead, Payal Patel ji. Alok is 7 year old and he has ADHD and autism. He have very improvement. He have still behavior issue and confusing mind. Payal ji shared some videos with us so that we can analyze the videos. If you can share the previous videos and the current videos, the positive changes which you are observing, and the key focus area where you want us to work through ABA or through our herbs, please mention that, please elaborate that. That will make our thing more easier, and we could be guiding you in a far better way. Mathematical knowledge. The ID is very good. It's a good ID, mathematical knowledge. Huh? Patient quote, sir, my father is 56. He recently got admitted with the UTI and after that he diagnosed with CKD. Is there any hope in Ayurvedic treatment? Divya is the coordinator. Muhammad Habib, age is 56 years. And creatinine is 3.2. See, if the creatinine is 3.2 and the doctors, they guided dialysis and 5 dialysis have been done. Yes, when he was hospitalized, there was infection due to the antibiotics, due to the infection. At times, they will have to do frequent dialysis. Now, when he comes out, when he's out of the hospital, yes, Ayurveda can be really helpful for him. We need to keep a check on the urine output. There are medicines like PTM5, Uramrit, renal care tablets. These things are very good for your child. These three things are essential: PTM5, renal care tablet, Uramrit, Nephrotic also can be utilized. But while you are doing that, my genuine request to you, always stay connected to one of our doctors for what diet needs to be taken. Keep a regular check on the KFT. Don't miss out on the urea levels or on the creatinine level. This is PTM5, which I was just guiding you. This is good for your child. You can go for PTM5. This is good for him. Then Nephrotic is another. It's a syrup-based thing, which is again good for your father. It improves the urine output also. Uramrit is the next one, which I just guided you about. This again is something which you should use in his case. So these are the things which you can use in his case, but stay connected to one of our doctors and don't worry. If we use the right kind of Ayurveda, in many cases, the output will increase, the creatinine levels will start going down. So it gives a very good recovery. Don't worry. And सविता किशोर जी 3 मंथ से हर्ब्स ले रहे हैं, शिरोपिचू भी कर रहे हैं, बट कोई स्पीच नहीं है और टॉयलेट ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हर नेम। सविता जी, समझ सकता हूँ, एक माँ होने के नाते आपको इस चीज़ की चिंता जरूर हो रही होगी। एक तो पेशेंट कोड जरूर लिखें ताकि हम ये जान पाएँ कि वाकई में ही कौन सा पेशेंट है, ABA सेशंस कितने हुए हैं, मुझे प्लीज़ लिख दीजिए। क्योंकि देखिए, टॉयलेट ट्रेनिंग कभी भी कोई दवाई से नहीं होगी सविता जी, तो इस बात को समझिए। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा कि आज मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा खाना खाने से पहले हाथ धोए, तो क्या कोई दवा कभी एक बच्चे को ये गाइड कर सकती है कि तुमने खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं? कभी नहीं। वो एक आदत है जिसे डेवलप करना पड़ता है, और बच्चा उस आदत को डेवलप कर पाए उसके लिए डेफिनेटली हर्ब्स सहायक हो सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर एक बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है और हम हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं उसकी सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को इंप्रूव करने के लिए, तब भी अकेला उनके यूज करने से बच्चा कभी भी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। जरूरत होगी OT एंड ABA की। सो प्लीज मुझे लिख दीजिए कि किसके के अंडर आपका जो है वो OT चल रहा है या ABA चल रहा है, क्या क्या कराया गया है, थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए ताकि अगर वहां कुछ कमी छूट रही है तो मैं बताऊं। सेम अब एज मुझे प्लीज आप लिख दीजिए, क्योंकि कुछ है नहीं है मेरे पास डिटेल, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। कोई भी डिटेल्स नहीं आई हैं कि बच्चे की एज क्या है, पेशेंट कोड क्या है। अगेन, अगर बच्चे की एज 3.5 ईयर से ऊपर है,
हर्ब्स का काम है उसे उस सिचुएशन में लेकर के जाना कि जब ये इस्तेमाल किया जाए, नीड क्रिएट की जाए, तो वो शब्दों का इस्तेमाल करें। बाकी अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है, आप घर पर ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, निश्चिंत होकर हमारे पास रहने आ जाए। हम बहुत जल्द ये सब चीजें खुद आपको करके दिखा देंगे, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आकर के रुकते हैं और तब हम खुद जो है वो सारी की सारी चीजें उनके लिए कर पाते हैं। क्योंकि जब आप घर में हैं, हमारी मजबूरी है, हम आपको सिखाएंगे, लेकिन हमारी डिपेंडेंस आप पे रहेगी। जब आप हमारे पास है, सब कुछ हम खुद कर पाएंगे। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ सविता जी की रजत आपके कोऑर्डिनेटर हैं, एज 4.10 ईयर्स है। सो द एज इज 4.10 ईयर्स। तो वही बात जो मैंने आपको अभी बताया कि बहुत जरूरी है। और रजत, आपने डिटेल्स तो दी, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं लिखा यहाँ पर कि कौन से एबीए एक्सपर्ट के अंदर आप इनकी एबीए करवा रहे हो। तो मैं बताना चाहूंगा सविता जी, मैं नहीं जानता हूँ कि आपके कोऑर्डिनेटर रजत ने आपको इस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस बताई है, लेकिन आप याद रखिए, जब बच्चा 3.5 साल से 4 साल से ऊपर है, वहां अगर 40% हर्ब्स का रोल है, तो 60% रोल जो हम साइकोथेरेपी करवा रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, उसका प्लीज उसे मिस मत कीजिए। बहुत बार जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो अपनी बहुत से पेशेंट्स होने के कारण उनके पास उतना फोर्सफुली नहीं समझा पाते हैं पेरेंट्स को। और बहुत बार पेरेंट्स समझते भी हैं, तो वो ये सोचते हैं कि चलो हमारे पास आ तो रहा है कोई ना कोई साइकोथेरेपी करवाने के लिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, कि हम आपको सिखाएं और आप वो इस्तेमाल करें बच्चे के केस में, तो आप बहुत जल्दी रिकवरी देखेंगे। और एज आई जस्ट मेंशन, किसी भी कारण से आपको लगता है आप नहीं कर पा रही हैं, निश्चिंत होकर हमारे पास ले आइए, हम सब कुछ करके दिखाएंगे। बट जरूरी होगा फिर उसके लिए हमारे पास रुकना। हम आगे चलते हैं। गौरव जी, इट्स नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट कि पायल जी, जो कि आपके पेशेंट हैं, वो तो हमारे साथ थे और आप अब उनके मैसेज की डिटेल्स हमें दे रहे हो। माफी चाहूंगा मैं पायल जी, आपके केस में आपके कोऑर्डिनेटर जो है मेरे को डिटेल्स टाइम पे नहीं दे पाए, तो अभी क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा आपका। आप आप सीमा प्लीज नोट कीजिए, अगर क्या कहते हैं जरूरी होगा तो आप डॉक्टर आरती के थ्रू जो है वो देख सकते हो। पायल जी का जो केस है, आप उस केस में डॉक्टर आरती के साथ एलोकेट कर सकते हो। गौरव जी और डॉक्टर आरती दोनों मिलकर देखेंगे ताकि पूरी डिटेल्स दे पाए। गोकुल, आपने लिखा है, नमस्कार सर, मेरे बेटे का ट्रीटमेंट आपके हॉस्पिटल से चल रहा है, उसकी स्पीच पहले से इम्प्रूव है, थैंक यू, बहुत बढ़िया है। आपने जानना चाहा है हाइपर एक्टिविटी को हम घर में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। गोकुल, थोड़ा सा एबीए इस्तेमाल करके आपको हमें करना क्या है, बच्चे की एनर्जी को पॉजिटिव तरफ लगाना है, इस तरीके से कंट्रोल करना है कि किसी भी प्रकार से वो बजाय उसे नेगेटिवली यूज करे, वो पॉजिटिवली यूज हो पाए। Robert, hi doctor, this side Robert from Germany, started treatment from last 3 months for my child, 24 months. Her hyperactivity has improved now, working on ABA part. Thanks a lot. That's really great to know, Robert. Keep on doing everything which is guided regularly. Amira ji, you have written, after starting RX from Indicare, my child is having great health. That's really great. And if you are having a bit of frequent urination in your child, you can add Chandra Prabhavati, half tablet in the morning, half in the evening. It can be mixed with your normal medications. और हम आगे चलते हैं। आप लोगों के कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स हैं, धन्यवाद उसके लिए। और हम आगे चलते हैं। बाला भानु जी, आपने लिखा है, हाय सर, माय डॉटर इज टेकिंग ट्रीटमेंट विद यू, शी इज 9 years old नाउ, शी इम्प्रूव लिटिल बिट बट she has a lot of fear. How she can overcome the fears? Still, she can't walk or talk. Balaji, I would like to have the details in this case. The patient code, when she started the treatment, because all those things when I can have, then I'll be in a better position to comment and guide you and advise you. So please share with me the patient code, the number of months when you started it with us, so that I can look into this and can be guiding you. And whether you met me and started the treatment or it was an online treatment, a lot of things I would require from your end. Be rest assured, I will be guiding you the level best when I get all these details. Pratik ji, आपने कहा, Radhya is having better sleep by 2 hours and his aggressive behavior has reduced approximately 30% just within 1 month of medication.
Thanks a lot for the appreciation, Pratik ji. त्रिशा एंड देवांश वर्ड, देखिए हाइपर एक्टिविटी के लिए हम जटामांसी का ऑयल ऐड कर सकते हैं, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को। बट अगेन मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि एक छोटे से क्वेश्चन की जगह थोड़ी डिटेल अगर मुझे मिल जाए तो केस टू केस, क्योंकि इलाज है, कुछ भी बताने में गलत बताया जा सकता है। सो अगर डिटेल्स आए, पेशेंट कोड साथ में आए, और बेटर तरीके से बताया जा सकता है। आरव एंड आद्विक सिंह, आपने कहा माई सन इज 2.5 years old and doesn't speak. Also, he doesn't interact with other children in park and doesn't respond to his name. Kindly suggest. See, the best part again is that the age is 2.5 years. That's the best thing. And I would request you to share some videos on the number which is there on the screen so that we can analyze the body type, we can see what is the body type, and we can be advising in a better way. For the time being, you can be using Breno A for your child. Breno A is a very ideal thing for a child of 2.5 years in age. But then I would be requiring some further details to be guiding further. कविता जी, आपने कहा सर स्नेहन और शिरोपुजु के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होना चाहिए? आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, स्नेहन किया अच्छे से और साथ ही शिरोपिचू कर दिया। Adhanai ji, you've written, my son has a problem with biting, but I have noticed that giving him a bite size of butter 3 to 4 times a day helps. That's really very great. So anything, see, there are things which we generally notice when we are dealing with our children. There are things like this. So anything which helps your child is always advisable. If you try milk cream, it will even give a better result than butter. Christina Anthony. Good day, doctor. I am Christina. For my daughter, we have consulted with you in December. She is having good improvements, more focused these days, and got improved a lot. And our school tell us to focus on OT. Shall we? Christina, we definitely, first of all, it's great to know that yes, the daughter is improving. That's really great. And I would be wishing her a best of luck so she further improves. As far as focusing on OT is concerned, my genuine advice is it's more important to focus on ABA, but there is no harm in focusing on OT also. But the balance should be more towards ABA, less toward OT. Mr. Afzal, you have mentioned Dr. Ruchi, us following my son's case. I hope you are satisfied by the interaction which Dr. Ruchi is doing with you guys. If there is anything where I can help you out, please feel free to ask me out. And whenever you are joining us, it's really great to have you guys joining us, but it's really very appreciable if you can share your patient codes while joining us so that we can be advising you in a far better way. Neha, the patient code is mentioned. Good evening, sir. My name is Neha and my son Naman, age 4.6 years. Even my son's name is Naman. So it's the same name as my son. And my question is how to reduce stubborn nature, how to increase social interaction with people. And Deepika is your coordinator, and the age is 2.6 years. Speech and behavior therapy is going on, and name response is weak, sitting is weak, command following is weak, socialization is weak, hyperactivity is there. And see, when we talk about all these things, what I personally feel is that we need to be working on the subconscious mind. Most of the things which you have mentioned are the ones where the subconscious mind is not giving the right kind of commands to the conscious mind. So don't worry. Once we start working on the subconscious mind, you will see a very good improvement coming the way of Naman. Man, in case of Naman, I'm going to give it my level best. थोड़ा हो जाता है ना सेम नेम, थोड़ा और जरूरी हो जाता है क्विक रिकवरी. So don't worry. Just kidding. You definitely will be getting the best of improvement, and I'll make sure that the problems which you're sharing for Naman are well taken care of. Sebastian, you have written, my child is 5 years old. We are really satisfied with your treatment. We have seen a good change in understanding. Hyperactivity is also improved. Please guide what else we can do. Sebastian, it's really great to know that all is going on in the right way. Please do remember that it is always very good to keep your child spiritually connected. Do take him to church regularly. And whenever you are doing prayers, do involve him in those prayers. And going ahead, mm, there are multiple questions where I am now getting details from some of your coordinators.
But then it is tough for me to immediately taking those questions very quickly. And then there is a question of 473780, 23 years male, cerebellum atrophy. Cerebellum atrophy at 23 years of age, it's not very encouraging because generally we see atrophy at a very advanced age. And you want to know whether this disease is curable. See, sitting out on a live session and immediately guiding you on a quick way for a disease which really is something which needs to be taken a proper history, which needs to be analyzed through pulse if possible. I won't be doing justice if I will immediately comment you over here. What I can update you is that see, Ayurveda really works in all brain disorders where we are having atrophy of any kind, cerebrum, cerebellum, pons, other kind of atrophies, damages. Ayurveda really gives very good results. But then a thorough understanding of the case, a proper pulse evaluation, and a detailed history and everything needs to be taken care of. So, in such a short span of time, without having a look at you, without having your pulse for my diagnosis, I won't be able to comment. But yes, there are things which are helpful for you. I can really guide you on those. And then, if I get a chance to check you up, yes, definitely I can try doing a lot of things for you. And otherwise, if I talk about my previous experiences, we have received good results in cerebral atrophy. It's more common is cerebral atrophy. Cerebellum atrophy is comparatively less common than cerebral atrophy. And in any case, are you having some balancing problems also or something like that? I would also like to know that. And going ahead, Arav and Advik, and then Ikra Patilji. Asas ट्रीटमेंट स्टार्टेड किया है अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ से रेगुलर मेडिसिन चल रही है बट ही इज craving for sweet nowadays and is it okay to give chapati sometimes and he's not supporting for head massage? Is it okay to give massage after he sleeps in night? You can always give a shiropichu after he sleeps in night, and if he's craving for sweets, give him petha. Petha is like a medicine for him, and carry on with everything. Be rest assured the things will work, and don't forget on doing the ABA. That is something which is really very important for you. Sharmila Thakurji, my son's age is 3 years old. His name is Satvik. How to increase his hyperactivity? Sharmila ji, it must be reduce the hyperactivity. I feel it's mistyped. So please elaborate if you want us to be guiding towards reducing the hyperactivity. I would like to know that. And going ahead, प्रतीक शेटे जी, हेलो सर, मेरे बेटा 3.5 इयर्स का है, अभी तक बात नहीं कर रहा है। प्रतीक जी सीरियसली लीजिए, 3.5 साल का हो गया है, अभी थोड़ी सी हम मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी काम कर जाएगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ मेंशन्ड है दैट द पेशेंट इज फ्रॉम नेपाल, so can't visit for pulse analysis. See, my genuine request to you is, if you can't visit me, get a pulse evaluated from someone who is nearby to you. And even if you are from Nepal, we get so many people from Nepal. I don't know whether it's possible for you to do the traveling or something, but see, in the case of cerebellum atrophy, I definitely will be suggesting certain things to Dr. Gagan which are good for you. But if we really want a good treatment, it's always advisable if we can do the Panchakarma part and everything. That is because syrinx is created, I can see at C2, C3 levels. Syrinx means that yes, the degeneration of spinal cord is going on. So it's too quick for me to be guiding something. If you're not able to come, then we'll be connecting over a video conferencing. You can connect with the team and we can go ahead with a video conferencing. And but I still will be guiding certain things to Dr. Gagan. And going ahead, there are many questions. Unluckily, I won't be able to take all those questions now because I am already out of the specified time and I have to proceed for some video conferencing sessions. The patients are working, and that's why I'll have to take a break. I'll have to apologize for those questions which I couldn't take. There are some questions
at the last, which I can definitely acknowledge, if not answer, like my son Jazim having treatment 3 years in your hospital. Now he's 6 years old. He came out of hyperactivity, eye contact, speech delays. Now only focusing in studies. That's really great. And then sometimes follow the command, but sometimes totally ignores. Please, in all those cases where you have not mentioned patient code, where your numbers are not there with us, don't forget to copy the same question, paste it on the number which is there on your screen through WhatsApp or email it to us so that we can be replying you in the best possible way. And then Ekam Jyot, we met 2 times with the medicine. The child stopped talking, sleeping, laughing completely. She doesn't, anything can work. सोनू जी, immediate basis पे I would like that if there is any such problem, because I can't understand exactly ki what you intend to say. It is too concise a thing for me to understand. So the number is there on your screen. Please come across that number, the same message over there, so that my team can check out on what exactly we need to be guiding in case of ACOM. And my son having, it's a psychological session from ND Care. So please elaborate on that. And as I just mentioned, I'll be taking a break right now. So for all those whose questions I couldn't take, or for those where I gave incomplete answers, my sincere apologies. But my genuine request to God that Almighty, and my assurance from my end, will always get the level best from our team. So with the same prayer which I always pray to God that Almighty, that all of you remain wrist pushed, all of you remain healthy. I, Dr. Navdeep Sharma, shall be taking a break from you now. Namaskar. Group activities for autism at ND Care Nirogam Private Limited. A very marked problem which is being faced by majority of autistic kids is socialization. The children, they do not perform up to the expectations of their parents, the society, when it comes on the part of social interaction with other children. And that is why, keeping this in mind, we at our Wrist Pushed Center Chandigarh go for various social activities. Inspired by the rich culture of Amritsar, we are rooted in tradition and diversity. Drawing energy from the vibrant city of Chandigarh, we embrace progress and inclusivity at ND Care Nirogam. Why stay at ND Care Nirogam for best results in autism? Ayurveda, Panchakarma, psychotherapy, ABA, OT and speech therapy, yoga and naturopathy, group activities, outdoor activities, all under one roof. Welcome to ND Care Nirogam, where we believe in creating a supportive community for individuals with autism. Today, we are excited to share how our carefully crafted group activities are making a positive impact on the lives of those we serve. At ND Care Nirogam, our team is dedicated to designing activities that cater to the unique needs of individuals on the autism spectrum. Our group activities are more than just fun. They are therapeutic and designed to foster social skills, sensory integration, and overall well-being. Our therapies provide a non-verbal way for individuals with autism to communicate and express themselves. It's amazing to see the creativity that unfolds during these sessions. Exercise is not only beneficial for physical health, but also for emotional well-being. Our group exercise sessions focus on building strength, coordination, and social skills. Specialized Panchkarma therapies at Wrist Pushed. बाद बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, उसमें आई कॉन्टेक्ट आ गया है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है। फर्स्ट पंचकर्मा से ही दिखने लग गया था कि गोकुल में थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है, एक आधे वर्ड्स भी बोलना शुरू कर दिया था। 5 में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है, उसमें इमोशंस आ गए हैं, वो कुछ बातें अंडरस्टैंड भी करने लगे हैं। मेरे बेटे की अंडरस्टैंडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। You can see our therapies really improved the understanding of autistic kids. पहले शुरू में मेरा बच्चा
चीखते थे, हर टाइम अचानक चीखते थे, हर टाइम चिड़चिड़ापन रहते थे, हाइपर था, बहुत ही हाइपर था। मेडिसिन लेने के बाद उसका ये चिड़चिड़ापन, एग्रेशन बहुत ही कम गया है। मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा भी दिया है और साथ साथ में साइकोथेरेपी भी चल रहे थे। तो ये साइकोथेरेपी, पंचकर्मा और मेडिसिन लाके कुल मिला के मेरा बच्चा अभी बहुत ही बेटर है। You can see our therapist really improve the hyperactivity of autism kids. Hello, my name is Mohammad Afzal and my son name is Mohammad Jazim. He is now 5.5 years and we find him having some issues like autism. At the age of his 3 years, he don't have speech and he have communication, lack of communication skill, and he have behavior issues, social difficulties. We started treatment in Ayurvedic. We refer ND care, Dr. Navdeep Sharma. Accordingly, based on his instruction, we had started treatment for autism. Slowly he is improved, high contacts, and now he's started speaking, and now he's going to school also. I am very thankful to the ND Care and Dr. Navdeep Sharma. मेरा नाम शाह खालिद है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा 4 साल का था, उसको ऑटिज़म था और वो बोल नहीं पा रहा था और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था। फिर मैंने डॉक्टर नवदीप शर्मा ND केयर निरोगम का नाम सुना और फिर मैंने वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अब बच्चे के अंदर स्टेबिलिटी आई है, हाइपर एक्टिविटी कम हुई है और वो खिलौनों के साथ खेलने लगा है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर ND केयर निरोगम का। मेरा बच्चा भी इसी बीमारी से ग्रसित था। जब मुझे पता लगा तो मैं काफ़ी चिंतित रही, पर थैंक यू है डॉक्टर नवदीप शर्मा जी। जब मैं इनसे मिली, इन्होंने ऐसा विश्वास मुझे दिया कि मेरा बच्चा आयुर्वेद के चमत्कार से और उनकी मेहनत से और उनके विश्वास से वो बिल्कुल आज ठीक है। जिसमें वो हाइपर एक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा थी, वो भी बहुत कम हुई है। आज वो सबसे घुलता मिलता है, बातचीत करता है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंकफुल है आयुर्वेदा, थैंकफुल है डॉक्टर नवदीप शर्मा कि पेरेंट्स के अंदर इतना विश्वास, इतना भरोसा दिलाने के लिए। वी आर वेरी थैंकफुल to Ayurveda and Navdeep Sharma. My daughter Prakriti, who had been diagnosed as autistic at the age of 3, and we have been very concerned about her treatment, and we went so many places regarding her treatment and therapy, but finally we landed at Chandigarh ND Care. Dr. Navdeep Sharma के जो उनका जो थेरेपी सेंटर है वहाँ हमने इसलिए काफ़ी उम्मीदें लेकर हम वहाँ गए और वहाँ हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया गया। हमारी कुछ डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया हमें। अब तक हमारा जो एक्सपीरियंस है दैट उनके माध्यम से जो भी गाइडेंस या असिस्टेंस मिलता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। एंड विद इन दिस शॉर्ट पीरियड वी हैव सीन सम reasonable progress. For example, she has started following commands. She has been more stable, and her sitting habit has improved. Sitting tolerance has improved. Thank you. Experience the harmony sound healing session at ND Care Nirogam Private Limited. हेलो, मैं प्रिया की मम्मा और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे साउंड हीलिंग में। बहुत शांति मिली मुझे और मेरे बेटे को मुझे थोड़ा बहुत चेंज नज़र आ रहा है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ यहाँ से जाते जाते। नेक्स्ट टाइम मुझे नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी। थैंक यू। हाय, मैं प्रिया का असम से आई हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे यहाँ साउंड सेशन अपना आर्टिस्ट से तो मैंने ये सब मेरे बेटी के साथ साउंड और जो कुछ भी किया मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे मैं क्लोज आइज मतलब आँख बंद करके है ना मैं खुद फील कर रही थी वो चीज़ को। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं नांदेड़ से आया हूँ, अभिजीत पवार नाम है मेरा, और हमने मैडम का यहाँ पे सेशन अटेंड किया है, साउंड सेशन अटेंड किया। हमें बहुत ही अच्छा लगा, मन को शांति मिली और
बच्चे में जब कोई साउंड सुन रहा था तब वो शांति से बैठा था। अच्छा, मेरे बेटी को लेकर मैं कोलकाता से आई हूँ, तो उसका माइल्ड ऑटिज्म प्रॉब्लम है। तो अभी तो हम लोग जो साउंड थेरेपी किया है वो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो फीलिंग हम खुद भी देख रहे थे, आँख बंद करके बैठे थे, अंदर में कुछ फीलिंग्स हो रहा था, इवन जैसा लग रहा था कि हम आँख बंद करके कोई मतलब सोते सोते कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, ऐसा फीलिंग्स हो रहा था। Another recovery story of autism treatment. Patient name, Vivan, age, 4.5 years old, disease, autism. Chief complaints, speech delay, less understanding ability, inexpressive, sensory issues, lack of focus. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 27 November 2022 at 11 o'clock am and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints were speech delay, unable to write and sensory issues. The child could not write by himself. He was also not very socially active. Throughout the treatment, significant improvement was seen in the child. He started writing on his own, gave answers and also became active. He started interacting more and gave answers instantly. His focus also saw an improvement. He also participated voluntarily in activities and also excelled academically. Instant responses were also seen within a few months of treatment. With improved attention span, he became quick in recognizing and mind games as well. He was able to interact more with peers, participate in class and also understand things in a better way. हाय, मेरा नाम प्रिया है एंड मेरा बेटा है 5 साल का होने वाला है एंड मुझे नवदीप सर से मेडिसिन लेते हुए मोर देन 1 ईयर हो गया है एंड आई हैव चेंज लाइक आई हैव सीन इमेंस चेंज इन माय सन। लाइक जब हम यहाँ पे आए थे तो ही वॉज लाइक वो एक एक वर्ड ही बोलता था एंड जब से हमने मेडिसिन शुरू की है एंड मेडिसिन के साथ साथ शिरोधारा भी इसकी मोर देन 1 ईयर से चल रही है एंड विद कंटिन्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन एंड ऑल उसमें ड्रास्टिक चेंज है। जैसे अभी वो सब कुछ अपनी चीज़ें 99% अपनी चीज़ें वो बता पाता है ईजिली एंड दैट टू दे स्टार्टेड मेकिंग फुल सेंटेंसेज ऑल्सो। क्लास में भी अकेडमिकली ही इज गोइंग सुपरबली ऑसम। ही हैज स्कोर्ड 88% इन हिज लास्ट टर्म एंड जहाँ पे जब वो नर्सरी में था ही जस्ट स्कोर्ड 55%, नॉट इवन 50%। एंड अभी जस्ट टर्म ए में ही इज इन जूनियर केजी, अभी टर्म ए में उसके 88% नंबर आए हैं। नाउ ही हैज स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो। पहले वो मतलब पकड़ के लिखता था, पेंसिल पकड़ के, उसका ग्रिप भी प्रॉपर नहीं था बट अब वो लिखने भी लग गया है। प्लस मुझे जो मेडिसिन से जो मुझे मेन फ़र्क दिखा है दैट इज़ सेंस, जो मुझे चाहिए था कि सेंस में थोड़ी सी डेवलपमेंट। पहले उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई घर में आ रहा है जा रहा है, वो जस्ट कमांड वाइज ही चल रहा था। लाइक ही स्टार्टेड फॉलोइंग माई कमांड्स, लेकिन अपने दिमाग से वो कुछ नहीं कर रहा था। बट जब से मेडिसिन लेना शुरू किया आफ्टर 3 मंथ्स मुझे ज़्यादा चेंजेस दिखे हैं। 3 मंथ्स में धीरे धीरे चेंज आए। अब विद इन अ ईयर तो ड्रास्टिक चेंज है। जैसे उसको देख के आप बोल ही नहीं सकते हो कि दैट ही हैड माइल्ड ऑटिज्म, तो उसको माइल्ड ऑटिज्म ही था बट अब वो माइल्ड ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम से भी निकल गया। अब जस्ट उसके थोड़े सिम्टम्स रह गए हैं एंड वी आर स्टिल इन टच विद नवदीप सर। वी आर स्टिल टेकिंग द मेडिसिन, उनकी जो भी गाइडलाइंस है, बीट डाइट, बीट उनका यंत्र, वी आर डूइंग दैट रिलीजियसली एंड आई मीन इट। विद दैट हम उनको हीलिंग म्यूजिक भी सिखाते हैं जिससे बच्चा इंटरनली भी हील होता है। मेडिसिन हम दे रहे हैं, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दी मेडिसिन एंड फैसिलिटीज। द डॉक्टर्स आर एवरी टाइम अवेलेबल और मुझे हफ्ते में 1 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे हफ्ते में 1 कॉल ज़रूर आता है यहाँ से दैट यू नो वेदर द थिंग्स आर गोइंग राइट। विवान के बारे में दे आस्क कि वो कैसा चल रहा है, तो लाइक दे आर इन टच, द होल टीम इज इन टच विद मी मोर देन 1 ईयर। मेडिसिन यहाँ पे टाइम से आ रही है, हमें घर पे डिलीवरी मिल जाती है। जब हमें आना होता है नवदीप सर के हमें कॉल्स आ जाते हैं दैट यू नो वो अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू मीट। तो द एज अ क्रक्स आई एम सैटिस्फाइड विद द मेडिसिन ऑल्सो एंड विद द स्टाफ ऑल्सो। थैंक यू। Call now to connect with world's senior most Ayurvedic healer, Dr. Navdeep Sharma, and gift your child autism-free life. Another recovery story of autism treatment. Patient name, Bhanu Pratap, age, 6.7 years old, disease, autism. Chief complaints, hyperactivity, speech delay, communication, short sitting, problem with understanding. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 2nd November 2022 at 11 o'clock am and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints of the parents of the child were hyperactivity, speech delay and short periods of sitting. The child also did not communicate much. Within a year of treatment from ND Care, a significant improvement was witnessed in the child.
His condition showed positive results with reduced hyperactivity, improved speech, better understanding and longer sitting. He even communicated and expressed his feelings in detail. Participation amongst peers has also increased. The child also participated actively in the school activities and showcased confidence. बच्चे का ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है तो हमारे बच्चे की बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो हमारा बच्चा बात भी नहीं करता था, कोई समझता नहीं था, अब इसमें स्पीच भी आई है, अंडरस्टैंडिंग आई है जी। अभी मतलब बैठ जाता है, पहले 10 मिनट भी बैठता था, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चे में, पहले कुछ नहीं था। तो सारी हमारी बताना है ना, पहले हमें पता नहीं था सर का, तो पता होता तो हम पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते, तो हम खुश हैं आपके बच्चे के लिए। Call now to connect with world's senior most Ayurvedic healer, Dr. Navdeep Sharma, and gift your child autism-free life. The Panchkarma therapy here, which has Shirodhara and Nasya in it, and it is really recommended, very relaxing, and everybody and whosoever needs it must go through it. हम लोग अपने बेटे के लिए आए हुए हैं यहाँ पे आयुष्मान मंदिर, जिसका उम्र लगभग 14 साल है। तो यहाँ हम लोग पंचकर्मा थेरेपी लिए, यहाँ का माहौल इतना फ्रेंडली, डॉक्टर स्टाफ सारे कुछ बहुत अच्छे लगे। पहले ये ना बोलती थी ना कुछ समझती थी, लेकिन जब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। I came in contact with Dr. Navdeep Sharma regarding my son Shutek. So he is 3 years old and he is having speech today and he is having some ADHD behavior. It was a good experience. But one thing I can say for sure that my son's sleep routine is pretty much better than before. He came to this center, had an appointment with the doctor. We had a great session with him. He has immense knowledge about autism. He is specialized in autism and Ayurvedic treatments. The therapies were done very well, and the housekeeping and everything was clean. The rooms are clean, so we had a good stay, good interaction with the doctors and therapists. So overall, it was a good experience. उसका पंचकर्मा हुआ तभी उसमें जो हाइपर एक्टिविटी था उसमें हमें बहुत फ़र्क नज़र आया, और उसकी स्पेशली जो स्लीपिंग साइकिल थी वो उसकी एकदम से सेट हो गई। जैसे वो रात में पहले हाइपर होके उठ जाता था, अभी वो भी उसका बंद हो गया, अभी उसको स्ट्रेट स्लीप मिलती है। At NDK Nirogam, we are committed to creating a supportive and inclusive space for individuals with autism. Our group activities are designed to empower and enrich lives, promoting social connections and overall well-being. Now these activities are one of the most important part of the treatment. Once we talk about a perfect social interaction, that can only happen when social activities are being done. If you are looking for a place where your loved ones can thrive, come join us at NDK Nirogam. Together, let's empower lives and build a brighter future. Help thousands of children around the world to recover successfully. He believes in the holistic healing power of Ayurveda, addressing the root cause of autism rather than just treating the symptoms. Dr. Sharma combines traditional Ayurvedic practices with modern research and technology to deliver effective and sustainable results. His commitment to excellence in patient care has earned him accolades and recognition within the Ayurvedic community. Dr. Navdeep Sharma, renowned Ayurvedic doctor, gains media acclaim for expertise and contributions. Call now to connect with world's senior most Ayurvedic doctor, Dr. Navdeep Sharma, and gift your child autism-free life. Empowering lives. Group activities for autism at NDK Nirogam Private Limited. A very marked problem which is being faced by majority of autistic kids is socialization. The children, they do not perform up to the expectations of their parents, the society, when it comes on the part of social interaction with other children. And that is why, keeping this in mind, we at our